Okay, so Assalamu alaikum. Well, in this video, we'll take a look at the radial nerve and profunda brachii artery, both together because both share a common course. First at the back of the arm, and then in the anterior compartment of arm, and then laterally near the lateral epicondyle of humerus. They end by dividing into their superficial and deeper branches. So let's just take a look at the radial nerve. We know that the radial nerve is a branch of the posterior cord of brachial plexus. It has a nerve root value of C5 to C8 and T1. Given off at the axilla from the posterior cord of brachial plexus. It runs behind the third part of axillary artery. We know that just below the level of teres major, the axillary artery becomes a brachial artery. So first it will be moving behind the axillary artery, and later on it runs behind the right, and then it will be leaving. अच्छा पहले ये मूव कर रही होती है just in the anterior aspect, right, और इसने फिर मूव करना होता है at the back of the arm, at the back of the humerus bone, in the radial groove or the radial sulcus, and it goes there by passing through the lower triangular space. We know that at the back region we have some spaces, the quadrangular space, the upper and lower triangular spaces. So just by passing through the lower triangular space, this radial nerve goes on the back side of the humerus bone by passing to pass through the spiral groove or the radial sulcus on the back of the humerus. So after passing from that sulcus or twining around the humerus bone, it passes through the lateral intramuscular septum to enter the anterior compartment, right. It moves into the posterior compartment of the arm, and then it goes into the anterior compartment, passing through the lateral intramuscular. And then on the lateral aspect of the humerus bone or the lateral epicondyle of humerus, it will be dividing into its superficial and its deeper branches. So इस तरह से इसका course खत्म हो जाता है. First in the axilla, then behind the humerus, in front of humerus, and on the lateral aspect of the lateral epicondyle to divide into superficial and deeper branches. Then we have certain relations of this nerve such that in the axillary region it will be passing behind the axillary artery, the third part of axillary artery, वो इसके anteriorly बड़ी होगी, and then posteriorly will be having the subscapularis muscle and the latissimus dorsi muscle, both of which are branches of the both of which are the muscles of the back region, right. So subscapularis on the back, latissimus dorsi on the back, and teres major will be on the back of the axillary of this radial nerve, right. So then laterally we'll be finding the axillary nerve and coracobrachialis muscle, and medial there will be the axillary vein. Okay, so laterally क्या कुछ पड़ा होगा हमारे radial nerve के, that is the axillary nerve and the coracobrachialis muscle, the muscle of the arm region, and middle there will be the axillary vein. So ये तो होगी relations in the arm region, or sorry in the axillary region, right. Anteriorly the third part of axillary artery, posteriorly the subscapularis muscle, latissimus dorsi, and the teres major muscle, laterally the axillary nerve and the coracobrachialis muscle, and medially we have the axillary vein, right. And then in the arm region, when it passes through the we know the lower triangular space and enters the groove, the radial groove, वहाँ पे इसके रिलेशन कुछ ऐसे होते हैं that it will be simply passing below the teres major muscle and between the long heads of the triceps brachii and the humerus bone, right, because that is what makes the triangular space, and then it enters the radial groove by passing through the lower triangular space. Then in the lower region, when it will be entering the anterior compartment, it will be piercing the lateral intramuscular septum, and before that will be passing through the lateral and medial head. So in the back region ये pass करती है between the long head and the lateral head, and in the back, and when it enters the anterior compartment, it has to pass through the lateral head and the medial head of the triceps brachii muscle, and just before it enters the forearm region, it divides into superficial and deeper branches. अगर बात की जाए इसकी ब्रांचेस की, तो इसकी कुछ मस्कुलर ब्रांचेस होती हैं, कुछ कुटेनियस ब्रांचेस होते हैं, कुछ आर्टिकुलर ब्रांचेस होती हैं. जहाँ जहाँ से गुजरी होती है वहाँ ब्रांचेस एरिया होती है. व्हेन इट इज़ अबव दी स्पाइरल ग्रुप, जब स्पाइरल ग्रुप में एंटर नहीं हो रही होती तो स्प्लाई कर रही होती है लॉन्ग एंड मीडियल हेड्स ऑफ ट्राइसेप्स को. जब भी स्पाइरल ग्रुप में होती है तब स्प्लाई कर रही होती है लेटरल एंड मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैचियाई को. एंड देन व्हेन इट एग्जिट्स स्पाइरल ग्रुप, स्प्लाई करती है प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स टू द ब्रैचियालिस मसल, व्हिच इज द मसल ऑफ द आर्म रीजन, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म रीजन. उसको जस्ट प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स सप्लाई करती है, विच आर सपोज टू बी कनेक्टेड टू द सेंस ऑफ पोजीशन, राइट. एंड जो ये मोटर फाइबर सप्लाई कर रही होती है वो जस्ट ब्रेकियोरेडियालिस को एंड एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस मसल को सप्लाई कर रही होती है, बोथ ऑफ विच आर द मसल्स ऑफ द फोर आर्म रीजन, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म रीजन, राइट. कुछ एंटीरियर के होते हैं, पोस्टीरियर के होते हैं, बट ये दोनों ही मतलब फोर आर्म के हैं, आर्म के नहीं हैं. So in this way it supplies all the heads of the हमारे रेडियल नर्व सप्लाई कर रही होती है all the heads of the triceps, or along with that proprioceptive fibers to the brachialis and motor fibers to the brachioradialis as well as extensor carpi radialis longus muscle. So ये तो होगी उसकी muscular branches, right.
So you can also say that radial nerve is a branch of is a nerve of the posterior compartment of arm, क्योंकि ये वहाँ के मसल्स को सप्लाई दे रही है. सेकेंडली ये कि इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ मस्कुलर स्पायरल नर्व, क्योंकि ये ह्यूमरस के अराउंड स्पायरली मूव करते हुए अपना कोर्स कवर करती है. एंड देन देयर आर सम ऑफ इट्स cutaneous branches. In the upper part it gives the posterior cutaneous nerve of the arm region, right? And then in the lower region, or in the spiral groove region, it gives off the lower lateral cutaneous nerve of the arm as well as the posterior cutaneous nerve of forearm. So 3 branches इसमें आती है जो कि cutaneous है. कौन कौन सी? posterior cutaneous nerve of arm, lower lateral cutaneous nerve of arm and posterior cutaneous nerve of forearm. ये सारी कहाँ से आ रही हैं? radial nerve से आ रही हैं. Then there are some articular branches supply करी होती हैं elbow joint को, भी कहाँ से आती हैं? radial nerve से आती है. The next topic of our today's lecture is the profunda brachii artery. So just after the brachial artery is formed, जैसे ही brachial artery बनती है from the axillary artery, it gives off its major, deeper or denser branch, that is the profunda brachii artery, right? This is the profunda brachii artery जो कि आगे आकर divide कर जाती है into an anterior and a posterior branch, जो कि इसकी terminal branches, anterior descending and posterior descending. Now anterior descending is also called as radial collateral branch, while the posterior descending is also called as the middle collateral branch. So इसी तरह ये दोनों branches होती हैं profunda brachii artery की, ये anastomose करी होती है at the level of elbow joint to form the anastomosis around the elbow joint with the branches of the brachial artery or with the branches of the radial artery or the ulnar artery, उनके साथ ये anastomose करी होती हैं to form a rich supply around the elbow joint, right? सो इसका भी जो कोर्स है वो जस्ट लाइक दी रेडियल नर्व ही है, तभी हम इसको साथ स्टडी कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जस्ट लाइक द रेडियल नर्व मूव कर रही होती है एंटीरियर कंपार्टमेंट से पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जाती है, एंड देन लेटरल इंटरमसल सेप्टम को प्रेस करके अगेन एंटीरियर कंपार्टमेंट में आ जाता है. उसके कोर्सेज बिल्कुल वैसे ही हैं, जस्ट इसकी थोड़ी ब्रांचेस डिफरेंट. दैट इज इट हैज़ अ रेडियल कोलेटरल ब्रांच और डिसेंडिंग एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच जो एनास्टोमोस करती है विद द रेडियल रिकरेंट ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी, राइट, एट द लेवल ऑफ एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द lateral epicondyle of humerus. And then it has a middle collateral branch or the posterior descending branch जो कि एनास्टोमोस कर रही होती है with the interosseous recurrent artery जो कि ब्रांच है ulnar artery की. So in this way it has an anterior descending and a posterior descending branch. Along with that it also has an ascending branch or the deltoid branch जो supply कर रही होती है deltoid muscle को. Along with that वो एनास्टोमोस कर रही होती है the posterior circumflex humeral artery which is a branch of third part of axillary artery, right? And then it also gives off a neutron artery to supply the humerus bone. बस. So that's all about the branches of the profunda brachii artery, anterior descending or the radial collateral, posterior descending or the middle collateral, ascending branch जो एनास्टोमोस कर रही होती है with the posterior circumflex humeral branch of the axillary artery, and then we have a neutron artery to the humerus bone. So that's all about the radial nerve and the profunda brachii artery. Thank you so much for listening to this lecture.